Now we shall read discuss about your topic, a letter to God. Um, till date, we have completed 3 to 4 paragraphs of your topic, a letter to God. And now we shall discuss the letter, page number 10. Okay, first paragraph of page number 10. So let me revise the previous class. There was a farmer whose name was Lencho, and his house was a solitary house which was set on the top of a low hill. Okay, and what? ଟିକେ ରିଭାଇଜ କଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଛୁ? The farmer, ଗୋଟେ ଲେଞ୍ଚ ବୋଲି farmer ଥିଲା. He hoped for a rain, okay, or at least a shower or a rain for his crops, for his cornfield, okay. And towards the north sky, he looked, okay. So out the morning, at the same time, as he had predicted, okay, it started to rain. But what happened? The rain changed or turned to a storm, hailstorm, and large hailstones began to fall. ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା. ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲା ଜାଣିଛ, ବର୍ଷା ନେଇକି କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା. All the crops totally destroyed. His soul was filled with sadness. ଗଭୀର ଦୁଃଖ ହେଲା ଲେଞ୍ଚକୁ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା? ବୁଝିହେଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା. ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କନଭରସେସନ କଥା ହେଲା ଏବଂ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ କହିଲା ଗୋଟେ ଆଶା. ଦେୟାର ୱାଜ ଏ ହୋପ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ. ଦେୟାର ୱାଜ ଏ ହୋପ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ. ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ତା ମନରେ. No one dies of hunger, he said to his family members. ମନେ ରଖ, କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ. ବୁଝିହେଲା. And he had a strong faith, a deep faith in God. Okay. ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର କଠିନ ବିଶ୍ୱାସ, କଠୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା. He knew that God would help him definitely. Okay, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ. ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା? when okay his crops was destroyed, he went to the post office to write a letter, and it was a letter to God. Okay, then we shall read the next. He wrote, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm ... So he wrote, God. ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା. ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ସେ? God, ଦେଖ ଦୀପ, first know what is peso and pesos. This is the currency of several Latin American countries. Latin American countries ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କରେନ୍ସି ମୁଦ୍ରା. ବୁଝିଲା, ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଇସା ରୁପିସ୍ କହୁଛୁ, our currency is rupees. The Latin American currency is pesos, where pesos plural form is pesos. So ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ? God, he wrote, ଭଗବାନ, if you don't help me, I and my family will go hungry this year. ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କର ଆମକୁ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବୁ? This year we shall go hungry, and so I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes. So I need 100 pesos in our, ଆମେ ଯେମିତି କହିବା, in our currency that is rupees. So I need 1,000 rupees to sow my field again. So ସେ ଲେଖିଲା, କ'ଣ ଲେଖିଲା? ମୋର କ୍ଷେତକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ
एवं टिल द परवर्ती कौन नेक्स्ट ईयर पर्यंत बंचिबा पई बुझिला चलिबा पई मते 100 पेसस दरकार भगवान जदि तुम मते साहाय्य न कर मु एवं मोर परिवार ए वर्ष आमे भोकरे मरिबो काहेकि कारण हला एमती झड़ हला हेलस्टोन कुआ पथर झड़ हला एवं सब किछि नष्ट हो गला एमती से वर्णना करिकि लिखिला He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote to God on the envelope. Envelope रो जो एड्रेस पर्सन टी थाए जोटी हम एड्रेस लिखि थाओ सेठी से कौन लिखिला पिला माने टू गॉड बोली के हम जोटी एड्रेस लिखि थाओ सेठी हम फॉर्म हमक टू लिखि थाओ बुझला से एनवेलप रे से टू गॉड बोली से एड्रेस लिखला he wrote the address of God. Have you ever written a letter to your friend or relatives, your father, mother, family members? We generally we write their address, so to God बोली address से देला पिला माने put the letter inside letter को एनवेलप रे भरिला एवं से कौन कला जाएगी से पोस्ट बॉक्स बा मेल बॉक्स ताको कहा है से मेल बॉक्स भीतर भरिला one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postman, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Amiable, what? Pleasant and friendly. Correspondence. Act of writing letters. So I have told you again and again, and also I am saying now that the glossary notes and glossary book ଯେତେବେଳେ topic ର last ଆଡକୁ notes ଏବଂ glossary ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ that is more very much more important word गुड़ाक typical amiable pleasant and friendly खुशमिजाज किस्म ର लोक जोटा जे सबले मजा रे थाए हस मजा करू थाए ଏବଂ फ्रेंडली अति सहजरे लोकଙ୍କ सहित सांग होई थाए बुझी ହେଲା correspondence चिट्ठी लिखिबार शैली one of the employee the postman जे कि चिट्ठी बांटे से पोस्ट ऑफिस रो एम्प्लॉय थिला से कोन कला चिट्ठी टू बाहर कला पोस्ट बॉक्स टू and he saw the letter it was written the address was given to God so he became surprised how a person can write a letter to God okay किपरि गोटे लोक भगवान को चिट्ठी लिखि परिबो so if somebody is writing a letter to God that then he might have some mental trouble or what को भलिया लोक लिखि परिबो गोटे भगवान को पाखो को चिट्ठी के लिखिबो जे कि मानसिक विकृत हेतबो मेंटल पर्सन और यू कैन से जहार अति निगूढ़ विश्वास थिबो भगवान को ऊपर तो तार निश्चित भाव रे ही हैड द फेथ देन डेफिनेटली गॉड वुड हेल्प हिम निश्चित भाव रे भगवान ताको सहायता कर सेति पे लिखि देला बट व्हेन ही सॉ द पोस्टमैन सॉ द लेटर ही बिकम सरप्राइज्ड एंड ही बिकम what very you can say funny एतबेले लेखिला पोस्ट किए पोस्टमैन टी देखिला एपरि केमते चिट्ठी टी लिखिछि गोटे लोकटे भगवान का पाखो से बहुत हसी पड़ला बहुत जोर रे हसी हसी जाय के से पोस्ट ऑफिस रो जो मुखिया थिले कि हु इज द चीफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस द पोस्टमास्टर रो डेस्क ऊपर रखिला चिट्ठी टी एवं बहुत जोर रे हसिला बुझिला देखैला ताको नेवर इन हिज कैरियर तार सारा जीवन काल चाकरी काल मध्य एपरि गोटे एड्रेस से जानी नथिला देखि नथिला सो ही बिकेम वेरी सरप्राइज आश्चर्य हे गला से
एवं जिते पोस्टमास्टर टी देखिला लेटर टी को he also became very funny. He also started laughing. बहुत जोर रे से भी हसिला बुझिला. And the postmaster, what type of person was the postmaster? Postmaster को भलिया लोक थिला, a fat amiable person. Fat गोटे मोटा थिला टिके एवं amiable बहुत बंधुत्वपूर्ण गोटे खुशमिजाज रे गोटे भल भल लोकटे थिला. गुड पर्सन यू कैन से मध्य जोर रे हसिला किंतु हसिला परे बुझिला. Immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. किंतु सांगे सांगे से कौन है पिला माने he became serious से गंभीर हो गला सांगे सांगे एवं चिठीटी ऊपर लिखि रखिला डेस्क ऊपर एवं कहला ओ व्हाट फेथ को भले अगाढ़ विश्वास अछि भगवान को ऊपर लोकटीर. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दैट मैन. काले मोर एमिति विश्वास था कि भगवान को ऊपर बुझिला. सो ही रेस्पेक्टेड द फेथ ऑफ लेंचो टू गॉड. भगवान को ऊपर जो विश्वास थिला लेंचोर से ताको सम्मान जणाइला बुझिला. बिकॉज ही वाज गुड पर्सन भल लोकटे थिला. सो ही सेड व्हाट फेथ स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पोंडेंस विथ गॉड. भगवान को पाखको चिट्ठी लिखिबार भगवान को सहित कथावार्ता हेबार माध्यम खोजी छी. So he became serious. Okay. So गोटे पैराग्राफ पढ़िबा पिला माने. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. बुझिला. तेणु कौन पाई not to shake, not to break the faith of Lencho on God, he decided to answer the letter. पोस्टमास्टर कौन कला भगवान को ऊपर जो विश्वास थिला लेंचोर ताको न भांगिबा पई से कौन कला तार चिठी रो उत्तर देबा पई चाहिला. बट प्रॉब्लम कौन बट when he बुझिला असुविधा टी कौन थिला बो he needed something more to answer the letter. बुझिला शुभेच्छा शुभकामना बा कोनोसी साहाय्य कोनोसी कथा कहिबा पई बा उत्तर देबा पई बुझिला ताकू केवल कलम एवं कागजर आवश्यक नथिला ताठारु किछि अधिक जिंस से आवश्यक चाहुथिला आवश्यक थिला. कोन देखो it was the evidence that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper. किंतु उत्तर देबा पई गुडविल शुभेच्छा शुभकामना एवं कोन कागज कलम ठारू अधिक जिंस दरकार थिला. कोन पिला माने कोन आइ देबो व्हाट इज दैट थिंग केवल उत्तर तो दे देले हवा नाही. बिकॉज लेंचो हैड आस्क्ड मॉनेटरी हेल्प फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान को 100 पेसस बा आमे जदि इंडियन हिसाब रे कहबा 100 टंका बा 1000 टंका बा 10,000 टंका जहाँ भी इंडियन रुपीस अनुसार हेबो सेही देशर करेंसी हिसाब रे ताकू सेही देशर मुद्रा हिसाब रे 100 पेसस से मागिथिला भगवान को आर्थिक सहायता मागिथिला बुझिला फाइनेंशियल हेल्प सेही पई ताकू पैसा देबा पई पड़िबो बुझिला. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. द वर्ड रिजोल्यूशन ए फर्म डिसीजन दृढ़ प्रतिज्ञा माने कौन है माने गोटे आम निष्पत्ति नेला माने सेटा कर्मा माने कर्मा कौन सी हालत रे बुझिला. दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन माने गोटे काम को निश्चित भाव में कौन सी हिसाब रे आमे करिया पई चेष्टा करबा. दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन तार निष्पत्ति से अटल रहिला बुझिला. तार कौन तार जो प्रतिज्ञा थिला जे तार विश्वास मो भांगीबी नहीं लंचर विश्वास भगवान को ऊपर. सो पैसा दरकार थिला. सो ही गैदर्ड द अमाउंट गैदर्ड द मनी पैसा से कौन कला संग्रह करिला से पैसा देबा पई चेष्टा कला. ही gave a part of his salary. He asked some money from his friends. देखो
He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So he gathered से पैसा से पैसा को कौन कला संग्रह करने ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ जो कर्मचारी ଥିଲେ एम्प्लॉय ତାଙ୍କ ଠାରୁ से ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି अंश ଦେଲା ତାର सैलरी रू तार जो दरमा पाउला फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी चैरिटी माने कोन पिला माने पांठी जो गरीब असहाय दरकारी लोकन को साहाय्य करने ପାଇଁ जो पांठी थाए सहयोग पांठी चैरिटी बुझिला माने हेल्प बोली भी कहि पार गोटे सहयोग भलिया से पैसाटी को पठाया ପାଇଁ से पैसा संग्रह करिला तो एते हमें पढ़िबा टिल डेट बुझिला सो रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन बारंबार पढ़ बही को डिफिकल्ट वर्ड गुडा को मन रख लेख कॉपी को नोट करो एवं भल भाव शुणिकी बारंबार बुक पढ़ी अभ्यास करो एंड दिस इज ए वेरी इजी चैप्टर नॉट सो डिफिकल्ट बुझीगला बहुत इजी चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो बहुत मजा मध्य लगे ये सो तुम होमवर्क है बुझीगला जो तुम बुक को पढ़ डिफिकल्ट वर्ड जो आम पढ़ले वर्ड गुड़ाक मन रख एंड तापर आम नेक्स्ट क्लास से पुणी फर्दर आम डिस्कस करवा।